नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आज विद बेरीज। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये एक ट्रेंड लाइन बताई थी जो लाइन चार्ट पे मैंने ड्रॉ की थी। नो डाउट बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड अबाउट इट अबाउट इट एंड टेक रीटेस्ट इन प्लेस इन एक्शन है। अगेन द क्लोज, मतलब नो डाउट ये टेक्निकली फॉर मी इट्स अ ब्रेकआउट, बट मेरे को एक थोड़ा कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं लग रहा अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न में देखो। लाइन चार्ट में नो डाउट इट इज क्लोज्ड एंड रीटेस्टिंग, बट दिस इज नॉट अ सच अ साइडवेज एक्शन, और मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोमेंटम एक तरफा नहीं है, तो दैट इज आई एम स्टिल वेटिंग। वेट एंड वॉच है मेरे लिए बैंक निफ्टी। मैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आई एम मोर कंफर्टेबल विद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस रादर देन ट्रेंड लाइंस। इट जस्ट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस। आई एम वेटिंग फॉर दिस जोन। ये थोड़ा बड़ा जोन होने वाला है, पर हाँ, इतना हाँ देना पड़ेगा, पर क्योंकि मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फिर ये एक दिख रहा है, एक स्विंग लो है। तो जब तक प्राइस इधर यहाँ पे नहीं आए तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला बैंक निफ्टी में। यह एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर लॉन्ग जाने का देख सकते हो। इसलिए फॉर मी बैंक निफ्टी में तो थोड़ा आई वुड से नो सेटअप आई एम फाइंडिंग। निफ्टी में एक थोड़ा सा बेरिश काइंड सेटअप, क्योंकि ये देखो ये आर्ली में ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है, एक इन्वर्टेड हैमर है, और अगर आप डेली में भी जाओ तो एक ट्रैप करके एक नीचे की तरफ क्लोजिंग है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा एक बेरिश साइड का व्यू बना सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स करना है तो एक ट्रेड बन सकता है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है ये, एंड यू कैन रियली टारगेट ये भी ये स्विंग लो तक। आई नो दिस सच अ स्मॉल स्टॉप लॉस, लोग बोलेंगे हिट हो जाएगा, बट दैट इज व्हाट, इफ नहीं हिट होता तो यू गेट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। आई वुड लुक आउट फॉर दिस ट्रेड। कल अगर यहाँ एंट्री मिली तो इतना याद रखो, ये यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऊपर की तरफ मुझे एंट्री मिली तो मैं लूंगा, विच जो आ रही है 17,670 के आसपास। ये उसके ऊपर हाई के ऊपर चला जाएगा, जो कि है 30 पॉइंट्स। ठीक है, 30 पॉइंट्स इन अ लॉट इज अ डिसेंट स्टॉप लॉस फॉर इंट्राडे। एंड या लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट। एक ट्रेंड लाइन भी टूटी है। This is the only setup I see in the index now. Or we wait, or the second is now this line that I've drawn at the resistance around 17,800. No doubt, whenever bank Nifty closes above this, surely we will look to go long. यहाँ पे भी एक change of structure होते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी एक trend line draw करे, I think yeah, so we need a close above this. In fact 17,800 for us to go bullish. जब भी प्राइस है मुझे ना, जब भी प्राइस मतलब जिस वाइल टॉकिंग टू गाइस मेरे को रियलाइज है, आई हैव रियलाइज दैट कि प्राइस जब भी ऐसा बीच में रहती है ना, आई आई नीड द प्राइस टू बी एट द एक्सट्रीम्स फॉर मी टू फाइंड अ सेटअप। एंड फॉर मी दिस इज नॉट दैट एट द एक्सट्रीम। इनफैक्ट जब ये प्राइस ये गिर रहा था मुझे, क्योंकि ये स्विंग लो के आसपास था, मैं बुलिश, बहुत ही बुलिश था। नो डाउट आई मिस्ड ऑन टू दिस रैली। ये गैप के बाद जो रीटेस्ट नहीं मिला, इसने मुझे उधर लॉन्ग नहीं करता है। मैं ईटीएफ में मैंने लॉन्ग था क्योंकि वहां पे मुझे स्टॉप लॉस मैनेज करना इजी पड़ रहा था, but no doubt I couldn't make the full potential of this up move using future or options. That's okay. We keep missing on retest. Now again, I would wait. ऐसा ऊपर जाए, यहाँ टच करके यहाँ का retest मिले, तो ये अभी ये बीच में प्राइस, तो I generally tend to not put in setups in it. Moving on to stocks. What do you have, Gandhar? Uh, एक तो आज let us talk about just big movers today, and then we will see if we can see any setup in it. First is Tata Motors, of course. Tata Motors rallying on the back of couple of good news. एक तो है लास्ट वीक के हमारे फ्राइडे के ऑटोमोबाइल शो में हमने बताया था कि टाटा मोटर्स का वॉल्यूम्स काफी बड़ा है. द जेएलआर साइड ऑफ बिजनेस इज आल्सो डूइंग डिसेंटली वेल. दैट इज वन गुड न्यूज. सेकंड गुड न्यूज वाज दैट उसका जो गोल्डमैन सैक्स का प्राइस टारगेट आया है, दे हैव अपग्रेडेड द प्राइस टारगेट. सो एंड 550 जनरली तक है। फॉर दिस इंटरनेशनल, हाँ, ये जनरली जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स या इन्वेस्टमेंट हाउसेस जो होते हैं, देयर टारगेट्स आर जनरली फॉलोड बाय द large index makers, so MSCIs, S&Ps of the world. So according to this, then they can revisit their valuation phenomena, see the analyst rating and re-rate it. So अगर टाटा मोटर्स में an upgrade in Goldman Sachs can indicate a repricing, or rather what we call re-rating. So with existing business, some investors are willing to pay more for it. उसके वजह से एक प्राइस अप्रिसिएशन आने के चांसेस है. दिस कुड बी वन रीजन. और एक गुड न्यूज जो है टाटा मोटर्स का, वो ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट और डीमर्जर का है. टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है. आई थिंक डीआरएचपी either is already filed or will be filed soon. They will be demerging, they will be raising capital, and that capital infusion of course can
support Tata Motors in the years to come. Kyunki currently, even on a net income basis, Tata Motors is not profitable. Of course, it's a free cash flow generating company, but it is still not profitable on net income basis because of depreciation and previous business losses that they have written down. So that could be that is one of the reasons why Tata Motors has given such a good up move. दूसरे एक पेयर ऑफ बिजनेस है जो हम देख रहे थे, पीएफसी और आरईसी, जिसमें भी एक आज अच्छा मूव आया है 4% और 5% का। और नाउ ये जो दोनों स्टॉक्स है वो एट द टॉप ऑफ इट्स रेंज है। तो क्षितिज, इफ वी कुड सी लिटिल लार्जर पिक्चर इन द चार्ट, देयर इट इज। सो हम लोग अभी 170 के आसपास है, 190 उसका ऑल टाइम हाई है। So this exact zone was what I was checking, 170-ish जोन में मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ ये चार्ट में। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि ये एक अच्छा शॉट बन सकता है विद अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड, सिंपली बिकॉज डाउन साइड में आप देख सकते हो उसका रेंज कहाँ पे है। इवन इफ वी सी मिड ऑफ द रेंज, सो 70 से 170 100 पॉइंट का रेंज है, तो 110 120 के आसपास मिड रेंज आएगा। that can actually act as a decent टारगेट इफ यू शॉर्ट ईयर। और आपका ऊपर के साइड स्टॉप लॉस कितना है? मुझे लगता है अगर 170 ब्रेक होता है तो इट्स बेटर टू टेक अ स्टॉप एंड देन री एंटर एट Enter. 190 लेवल्स। इट डजंट मेक सेंस टू कैरी द लॉस फॉर 20 रुपीज एंड देन टेक अ स्टॉप लॉस अबव इट, क्योंकि इसका फ्यूचर में लॉट साइज बहुत बड़ा है। आई थिंक इसका लॉट साइज 7000 या 8,000. 6800 8000 है। तो आप करिए 8,000 इंटू 20 रुपीज, उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, विच इज नॉट रियली फिजिबल। बट या दिस इज वन स्टॉक एंड सिमिलर सेटअप इज फॉर्मिंग इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आरईसी। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग क्योंकि आरईसी पीएफसी की एक सब्सिडियरी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम सेटअप, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है, ये स्टॉक अभी भी मिड ऑफ द रेंज कह सकते हैं। मतलब अभी का जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो 2019 का प्राइस का रेजिस्टेंस है, और जो ऑल टाइम हाई है वो अभी भी काफी दूर है। जो पीएफसी के केस में 20 रुपए दूर था, ये केस में वो 132, तो ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स दूर है। सो ये हिसाब से यहाँ पे भी एक आरआर आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से देखना होगा कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो कहाँ करना है, अगर आप ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट लेने वाले, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक क्षितिज अभी भी स्कोप है ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट टाइप सेटअप के लिए। Yes, yes. वेरएज पीएफसी में हमने देखा था कि हम लोग ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द रेंज है ही, मतलब हम 170 ब्रेक करें तो भी 190 का रेजिस्टेंस हमें दिख ही रहा है सामने। तो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट वाला सेटअप ना काम करे। यहाँ पे हालांकि 130 का ब्रेक मिले तो आप अच्छे से 30-40 पॉइंट्स कैरी कर सकते हैं, 20-25% आप कैरी कर सकते हैं ये ट्रेड में। सो आई थिंक उसके लिए ये दो पेयर्स मैं देख रहा हूँ जिसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा है। गोइंग ओवर माय वॉच लिस्ट, और कुछ है क्षितिज दैट हैज पॉप्ड अप इन योर वॉच लिस्ट? No, I was watching IEX. I keep watching हाँ। IEX. But yeah, it's like just like to learn like how deeper the hunts can get. Like some people, I remember shouting on Telegram when this fall started, like IEX to show sub 100, and just see the U-turn. Like if this is a hunt, sometimes I feel like not डराने का कोशिश नहीं कर रहा, but if this is something that they call it a hunt, then my God, I don't know how do you then plan a trade? But obviously the momentum was there. If you're a trader and if you can flip your views that quick, I think a lot of money. Imagine 20% on the downside and 20% on the upside, and within the best part is it took only for what a total 2 weeks. That's it. हाँ, मतलब इफ यू सी 150 का अर्लियर डेट, इट वाज मिड मार्च, सो मिड मार्च टू अभी नाउ इज मिड अप्रैल। Yeah. So in 1 month you have 20% down move and 20% up move. Even if you capture 5% of it on a future lot, is 25% gains. Yeah, and another reason why such moves are possible in IEX is because एक तो उसका स्टॉक प्राइस कम है, तो 150 200 range is very high volume वाला range where a lot of traders do come in. Second is it is in FNO now, so people are comfortable taking larger positions because hedging is available. Yeah. एंड एट द सेम टाइम देर इज नो लार्ज प्रमोटर ग्रुप, जो हमें बाकी के कई सारे स्टॉक्स में दिखता है कि
50 60 70 75% तक का शेयर होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप के पास रहता है, and when once it goes to promoter group, those shares are locked from the market. I mean, Yeah. very rarely do they come back in the market for volumes. Whereas in the case of IEX, I think the जो founding company है और जो प्रमोटर ग्रुप इक्विवेलेंट आईएक्स में जो है, जिसमें बीएससी का मदर का 93 मून्स टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ एक कंपनी है, दो तीन और कंपनीज है, कुछ एफआईआईज है. सो ये इसमें लिक्विड कैपिटल ज्यादा है, बिकॉज ऐसी कैपिटल या ऐसे शेयर होल्डर्स जो शेयर को लेके बैठे रहे, ऐसे शेयर होल्डर्स आईएक्स में कम है. Hmm. So with the price movements, the demand and supply can change quite drastically. मतलब हम 3 दिन में low of the range पहुंच गए थे, where a lot of maybe institutional buying must have happened Yeah. without the block deals. So वो दिखा नहीं. Ah. लेकिन a lot of institutional buying might have happened, and that could be one of the reasons why ये इतना sharp rise आया है. That could be one of the reasons. Actual में I'm not sure. Volume spike. See, now they generally say while falling there were no volumes. So Hmm. that is the volume analysis they do, and while going up there is volume. So yeah, some so the direction should be on the upside. Let's see what happens. I am waiting for the break now. Hmm. We will Yeah, see how IEX behaves. yeah, it's something, and that is why also, guys, if you guys are learning price action, tend to have this favorite stock or stick to these 5 6 stocks that you keep seeing, and the story will start unfolding. I call it a story because it does. After a point, you just can read the price. And yeah, I kind of Yes. follow IEX a lot, and yeah, it gives you the best rate. Your entries will be so on spot when you get it, because you'll really wait for the story to unfold. So yeah, something, if anybody is learning price action, keep 5 stocks that you keep watching. I'm not saying you need to draw resistance, support, trend lines, patterns. No, just keep watching. Yes. Yes. True. True. Do we have any other stock here? Let me just check my watch list once. But unlikely. I mean, I was watching the market today. There was nothing Okay, very interesting happening really. Nope, nothing. okay. I think we can. Wrap it Shall we up. call Yeah, it a day? yeah. Yep. So guys, thanks for tuning into After Hours with Bereez. This was Kshitij and Gandhar. Make sure you like this video, share it with your friends and family, subscribe to our YouTube channel so that you are notified every time we upload a new video. Thank you.